speed is not as important as direction is, right? Direction is way more important than speed. It is okay that your 22-year-old other friend is scoring very high marks in college. It's okay that your 22-year-old friend has got a very good package at this company. You are not competing with him at 22. Hi, my name is Abhishek Rangad and welcome back to the new episode of Ebiholic podcast, जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज आपके लिए लेके आता हूँ थ्रू माय पॉडकास्ट। काफी लोगों के डीएम्स एंड कमेंट्स आए हैं लास्ट 3 पॉडकास्ट पे कि आपको ये जो मेरे पॉडकास्ट आ रहे हैं आपको काफी पसंद आ रहे हैं, एंड जो भी सारे सजेशंस होते हैं उनको भी मैं कंसिडर करता हूँ। हर एक पॉडकास्ट के अंदर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरे को बहुत सारी लर्निंग मिलती है आप लोगों से। तो मेरे जो व्यूअर्स है बहुत अच्छे हैं। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन जो आज का एपिसोड भी देख रहे हो और आने वाले जो पहले मेरे 3 एपिसोड आ चुके हैं उन एपिसोड को भी आपने देखा है। सो आई वांट टू थैंक्स ईच एंड एवरीवन। आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट में जो आज का गेस्ट है उनका नाम है नीलपर्णा सेन। वो अभी करंटली सीईओ है बीबी क्लब इंडिया के, एंड शी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ लूसिड इंडिया जो फाइंड एंड रेस्ट्रो है। So a normal person to becoming a CEO of that big brand called BB Club India, कैसे वो यहाँ तक आए हैं, उनकी क्या जर्नी रही है। नॉट जस्ट जर्नी बट काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है। जस्ट लाइक अगर आप एक कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हो या फिर आपको ये नहीं पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स, उनके लिए ये पॉडकास्ट तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिकॉज यह इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये बताया कि मैं कैसे अपने लाइफ में मैंने एक ऐसे स्टेज पे मैंने अपने डिसीजंस लिए थे जब शायद उनके पास में कोई नहीं था, या राइट डिसीजन क्या होता है वो उन्हें नहीं पता था। सो ये सारी चीज़ें कैसे वो स्ट्रेटेजी थी, जो सोचने की स्ट्रेटेजी थी और क्या करना चाहिए था, जो राइट आज उनके लिए रहा है, आज इतने बड़े ब्रांड के सीईओ बन गए। सो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। ऑल्सो इन दिस फिटनेस वर्ल्ड जहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते हैं, वो भी हमने बात करी है कि कैसे अगर फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आप एक बिगिनर हो तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं काफ़ी लोगों को, हर एक तीसरे बंदे को होता है मेंटल हेल्थ को लेके, काफ़ी कोई बात कम करता है। तो यहाँ पे हमने वो बात करी है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हमने की है। और फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा एक मेन रोल है टेक्नोलॉजी का, तो वो भी हमने बात करी है कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पेक्ट कर रही है और वो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इतने बड़े ब्रांड को चला रहे हैं। ऑल्सो ये सारी चीज़ों को अगर आप पूरे एपिसोड को अगर आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और डेफिनेटली वर्थ द टाइम है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस पॉडकास्ट को 1:1.5 पे आप इसको स्विच कर दो, बिकॉज आपका वक्त भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। पूरा एपिसोड देखो, अच्छे से देखो, मेक श्योर आप हेडफोन यूज़ करना, सो आपको बेटर क्वालिटी समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज़ है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करना। नए हो मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो, और अगर कंटेंट अच्छे नहीं लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस पॉडकास्ट एंड एंजॉय दिस एपिसोड। Finally, welcome to Ebiholic podcast. How are you? All good. All good. Okay. So, let's start this podcast. Absolutely. सबसे पहले क्वेश्चन करूँगा, Who are you? Okay. Who am I? So who am I keeps changing every day. And who I was in 2015 when I first started my career is very different जो मैं अब हूँ उससे, right? And I think हम सबको ऐसे बदलता रहना चाहिए. So today if you ask me who are you should be different from you asking me who are you 5 years from now, right? Yes. So today who I am, I consider myself as somebody who sets up businesses in the fitness industry, Okay. who sets up careers in the fitness industry. So that is the main core of who I am. Somebody who sets up systems in the fitness industry that could help everybody involved in it, right? So not just the trainers, not just the gym, but also the clients and also people at large, okay? And I'm also somebody who loves setting up other hospitality businesses, जैसे Lucid set किया. So Lucid is a fine dine restaurant, right? I have set
KG Fitness. I've run KG Fitness for 8 years and हमने उस जिम को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहाँ पे वो इंडिया का बेस्ट, इंडिया के हाईएस्ट रेवेन्यूज जनरेट करता था, इंडिया के हाईएस्ट नंबर्स थे, राइट, बिकॉज सेटअप उतना था. देन आई सेट अप लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का जिम and we achieved great numbers, like never seen before numbers. Then I set up BB Club, right, and I'm currently running and expanding BB Club, and I set up Lucid. Okay, Lucid is a fine and restaurant, and yeah, so here I am. I am just somebody who sets up businesses, systems and careers in the fitness industry and sometimes in the hospitality industry. Okay. So इससे एक बात तो क्लियर हो गई. हाँ. लोगों को जब अपना बिजनेस सेट करना हो, स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री, नीलपर्णा सेन को बुलाना है. I would love to do that. I would love to do that. बिना पैसों के कर दूंगी मैं ऐसा. सही है. तो ये आपका स्पेशलिस्ट, आप इस फील्ड के अंदर है कि आपको बिजनेस सेटअप करना बहुत अच्छे से आता है. Yes. राइट. Yes. अब थोड़ा पीछे आते हैं. ठीक है. कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका ये फिटनेस इंडस्ट्री में, आप कैसे एंगेज हुए? ओके, सो फिटनेस इंडस्ट्री में एंगेजमेंट का मेरा कोई प्लान ही नहीं था. ऑल राइट, अगर आप 10 साल पहले की बात करो और अगर आप मुझे बोलो कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में जाओगे, आई वुड लाफ एट यू एंड टेल यू दैट भाई हम खाने पीने वाले, पार्टी करने वाले इंसान हैं, हम कभी फिटनेस इंडस्ट्री में जा ही नहीं सकते. ये हमारा फील्ड ही नहीं है. डिसिप्लिन मतलब नॉट निलपढ़ना. ओके, राइट. And what happened was, I come from the marketing background. I am originally from the advertising industry, and I had normal corporate goals and corporate plans. एक corporate sector में जाऊँगी, and I will do very well. My biggest goal was to get hired by an MNC and have a fat salary, and that's it. So typical life where I looked forward to the weekends. Weekday पे एकदम अच्छे से काम कर लो, salary के लिए अच्छे से काम कर लो, and weekends पे मस्त पार्टी करो. गोल इन लाइफ यही था. बीच में ऐसा हुआ कि मुझे 1 साल का ब्रेक लेना था. ओके. और वो 1 साल के ब्रेक में सूरत में थी. क्या करती सूरत में और कुछ करने को नहीं है, राइट. देयर वाज नो पार्टिंग, देयर वाज नो अल्कोहल, एंड आई हैड टू प्रिपेयर फॉर अ मास्टर्स. ऑलराइट, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर अ मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जाम. सो वो मास्टर का एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर किया नहीं किया, मैंने तब डिसाइड किया कि मैं जिम तो ज्वाइन कर लेती हूँ 1 साल में, ये टाइम पास मस्त हो जाएगा. ओके. Gym join किया and I saw changes in my body. Then I saw that the harder I worked at the gym, the better results I got. Okay. And honestly, वो मेरे लाइफ का सबसे पहली बार था जब मैंने रियलाइज किया that hard work can bring about change that can change your life. Hard work is the only way that you can use to completely change everything you got. Because तब तक तो मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट थी, एक एकेडमिक स्टूडेंट थी. मुझे लगता था कि हाँ, जो मेरे कंट्रोल में है पढ़ लिया, अगर स्मार्ट हो तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, स्मार्ट थी तो रिजल्ट्स आ जाते थे. मेहनत का इंपॉर्टेंस कभी ट्रूली नहीं समझा था. ओके. फिटनेस ने मुझे मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझाया. फास्ट फॉरवर्ड टू दैट 1 year, वो 1 साल में मेरे अंदर ये चेंजेस आए कि मैं रात को 4 बजे सोती थी, सुबह के 4 बजे मैं सोती थी. Okay. और 1 साल बाद मैं सुबह के 4 बजे उठती थी. सो एंड इट लिटरली changed my life from like 0 to 100, 360 degrees. Okay, I went from somebody who would just कभी सोचा ही नहीं था कि खाना क्या है, यू नो, पिक अप अ चिप्स का पैकेट, पिक अप एन आइसक्रीम का पैकेट, एंड कोई प्लान नहीं, कोई गोल नहीं, कोई सिस्टम नहीं दिन का. आज सुबह को उठ के मन किया कि ये करना है, ये कर लिया. सुबह को उठ के मन किया कि पार्टी करना है, पार्टी कर लिया. सुबह को उठ के मन किया कि गोवा जाना है, गोवा जा लिया. ये अभी भी है, लेकिन एक सिस्टम से चलता है. एंड वो सिस्टम मुझे सिखाया फिटनेस ने, राइट. सो आई थॉट दैट टाइम दैट अगर मुझे फिटनेस ने इतना दिया है, I have to give back something, right? And फिटनेस ने जो मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं एक ही तरीके से ये फेवर रिटर्न कर सकती थी. That is, why don't I help the industry grow? If I am feeling this, why can't I make thousands of people feel? आपने कोई कमी देखी थी ऐसी कुछ कि हाँ ये चेंज करने जैसा? Yes. So, okay, now a lot of people, a lot of clients wanted to change, right? मैं एक एडुकेटेड बैकग्राउंड से थी, तो मैंने तो मेरा गूगल सर्च करके, मैंने तो मेरा रिसर्च करके खुद से चेंज हो गई, एंड मस्त मुझे रिजल्ट मिला, एंड दोज रिजल्ट्स मोटिवेटेड मी फॉर फर्दर रिजल्ट्स, एंड दोज रिजल्ट्स मोटिवेटेड मी टू चेंज माय लाइफ. ओके.
बट नॉट एवरीबडी इज द सेम. सारे क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं था, मेरे पास तो टाइम ही टाइम था. सारे क्लाइंट्स के पास टाइम नहीं है जो वो रिसर्च कर सके. सारे क्लाइंट्स के पास वो विलिंगनेस नहीं है जो रिसर्च कर सके. मोस्टली सारे क्लाइंट्स के पास क्या था, जो ट्रेनर बोलेगा वो, राइट. अब अगर आप 8 साल पहले की बात करें, ट्रेनर्स उतने एडुकेटेड नहीं थे जितने अभी शायद हैं थोड़े बहुत ट्रेनर्स. यस, राइट. ट्रेनर बोलता था ब्लाइंडली, ट्रेनर बोलता ब्लाइंडली कार्ब्स छोड़ दो तो कार्ब्स छोड़ दिया. ट्रेनर बोलता था कि खाली फ्रूट्स पे रहो तो खाली फ्रूट्स पे रह लिया. ऐसे बहुत सारे डेंजरस एडवाइसेस देते थे, राइट. ट्रेनर ने बोल दिया कि 1 महीने में आपको 10 kg लूज करना है, मैं करवा के दूंगा, तो 10 kg लूज करवा लो. सो ऐसे ही वो डेंजरस एडवाइसेस मुझे बहुत सारे दिखे. एंड मुझे ये दिखा कि राइट गाइडेंस सही क्लाइंट्स तक पहुंच नहीं रहे हैं. इसलिए क्या होता है, क्लाइंट्स जिम ज्वाइन करते थे या कोई भी फिटनेस ज्वाइन करते थे, 2-3 महीना करते थे, फिर छोड़ देते थे, एंड उनकी लाइफ छोड़ने के बाद और वर्स हो जाती थी. ओके. सो वो राइट गाइडेंस के एब्सेंस में अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स वर सफरिंग. मुझे जैसा बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट मिलना तो दूर, उनको तो हार्म हो गया उल्टा. ओके. सो आई सॉ दिस गैप, अ लैक ऑफ educated qualified coaches, all right. And second, I thought that this industry जिसमें इतना सारा गैप है, it needs me more than the advertising industry जिसमें मेरे जैसे हजारों पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, सही है. right. And plus this was something that excited me to wake up in the morning. I did not need an alarm clock to wake up in the morning and be excited about researching more about fitness, be excited about researching more about the industry, etc., etc. So I was like, you know what? Leave the corporate career. I had given my CAT. I had scored excellently in my CAT exam. I thought I had like a fork in the road, right? CAT में बहुत अच्छा रिजल्ट आया. एक मस्त MBA कॉलेज में जाओ, एक फैट सैलरी पकड़ो, एंड वही अच्छे से मेहनत करो, वीकेंड पे पार्टी करो, सॉर्टेड लाइफ, राइट, फिक्स्ड इनकम एंड ऑल ऑफ दैट. या फिर चेंज द ब्लडी वर्ल्ड. Okay, change people's lives. Don't think about the money. पैसा आना हो तो आएगा. अभी के लिए अपना पैशन फॉलो करो. अभी के लिए वो उस डायरेक्शन में जाओ जो तुमको एक्साइट करता है. ओके. एंड वो भी दिखा कि पैसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है. ऑल राइट. और पैसे कमाना आ जाता है when you are excited about something. So I thought, screw it. I took the leap of faith and I followed what really excited me, which was fitness. So I decided to be a trainer, and I was a trainer for initial first few months. I was a trainer. I was a junior trainer at KG Fitness, and then I was so passionate. I used to work for 18 hours every single day, and वो 18 hours काम करने के बाद भी I used to do my own research. I used to only sleep for 2-3 hours, and ये मेहनत से I got promoted to being the CEO, and I was given the entire gym के संभालो इसको. ओके. सो आई थॉट कि यार मेरे 20 क्लाइंट हैंडल करने से अच्छा मैं 2000 क्लाइंट्स की हेल्प क्यों नहीं करूं. राइट. एंड एवर सिंस देन आई हैव नॉट स्टॉप्ड. सो बेसिकली दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री. सो इट वाज बेसिकली माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेटिंग मी टू डू मोर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, डू मोर फॉर एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. ओके. सो ऐसा भी कहा जाता है ना कि ड्यूरिंग स्लीप अगर अच्छी हो इंसान की तो रिकवरी अच्छी होती है बहुत ज़्यादा. लेकिन आपके ये जो आपने अभी बताया उसके ऐसा लग रहा है कि आपको कभी अच्छी नींद मिली नहीं. तो आपको ये चीज़ मतलब आप कहते हो ना कि हाँ 2-3 घंटे मेरे को अच्छे से नींद मिल जाती थी तो बहुत बढ़िया था. हाँ. सो मैं ये रेकमेंड नहीं करती दैट 2-3 घंटे आपको सो के काम करना है. कभी रेकमेंड किसी को भी नहीं करती, बिकॉज अगर आपको फिट होना है, द बेस्ट फैट बर्नर इज स्लीप. द बेस्ट फैट बर्नर इज 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. बट दैट टाइम इट वॉजंट लाइक मैं खुद सफर करके उठ रही थी. राइट. आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट दैट मुझे अगर मैं चाहती भी तो भी नींद नहीं आती. ओके. राइट. एंड अगर आपको ऐसा कुछ मिला जहाँ पे ऐसा कुछ काम मिला, ऐसा कुछ पर्पस मिला लाइफ में, जहाँ पे आपको 2-3 घंटे की नींद मिलके भी आप उतने ही एक्साइटेड हो, आप उतना ही हार्डवर्क कर रहे हो, देन आई वुड से टेक इट मैन. बट लोग क्यों 2-3 घंटा सोते हैं या 5 घंटा या 4-5 घंटे सोते हैं? क्योंकि वो लोग को रात तक नेटफ्लिक्स देखना होता है. ओके.
right? I have a problem with people watching Netflix for 4 hours and then only sleeping for 5 hours in the night, and then waking up and hating their jobs, hating their lack of sleep, hating their mental state. That is when it's harmful. But that 1 in a million time, that 1 year out of your whole life, maybe that 1 year where you're setting your business up, where you're extremely passionate about something, where that hard work is required and it excites you, that is when thoda sa sleep compromise kar lo to chalega, but then it has to be for something that you can truly die for. Okay. अब आपने ऐसा कहा कि लाइक मुझे एक ऐसी पोजीशन मिल गई थी जो शायद मैं मतलब कि मेरे को 2000 लोगों की लाइफ चेंज करने का एक मौका मिला. At the age of 22. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. Yeah. उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती ना. अब जब एक पर्सन, एक क्लाइंट आपके पास में आ रहा है, बहुत सारे मिथ लेके आता ही है. हाँ. अब उसको अनलर्न प्रोसेस करवाना पड़ेगा. Yes. कि बहुत सारी चीजें पहले तो भूले. Yes. जो चीजें वो लेके आए अपने माइंड में. Yes. काफी बार हुआ होगा ऐसा. बहुत बार. आज भी होता है. आज भी होता है. इवन आफ्टर कोविड लोगों ने फिटनेस के बारे में खुद ने नॉलेज लेना बहुत चालू कर दिया है. करेक्ट. लेकिन फिर भी कुछ मिथ दिमाग में लेके आते हैं. एक्सरसाइज इसी वे से होती है, डाइट इसी वे से होता है, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न ऐसा ही होना चाहिए. आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे. सबसे इंटरेस्टिंग कुछ आया था कभी? हर रोज आते हैं इंटरेस्टिंग तो. यूजुअली सारे इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं कॉमन जितने भी मिथ्स हैं मैं ये बोलूँगी, because this is going to help people more, right? So a lot of people, and it's spread by a lot of fitness schools, in fact, that कार्बोहाइड्रेट्स खाना ही नहीं चाहिए. ओके. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया आपके फ्रूट्स आ गए, आपका रोटी राइस आ गया, आपका कोई भी, you know, even sprouts have carbs, even rajma has carbs. Okay, a lot of good things that we see around, a lot of good things that are packed with vitamins and minerals, they have carbs. One of the biggest myths that have been going around in the industry is that you need to eliminate all sorts of carbs to get fat loss. Okay. And that is a complete false treatment. You have to balance out the diet, right? You always have to balance out the diet, and restricting anything that is healthy, that is packed with minerals and vitamins, is the worst advice you can give to anybody, right? So this is called a keto diet, right? Okay. And a lot of people come with me with the mindset that मेरा weight तभी ही जाता है जब मैं carbs बंद करूँगी because of this person saying this or that person saying this, right? Can you define this keto diet concept? So ketogenic diet is basically a diet where you only eat a lot of fat, like you eat a lot of butter and ghee. So fat is basically, so protein is basically, dahi has protein, right? Milk has some protein. Paneer has protein. Tofu has protein. Chicken has protein. Eggs has protein. Whey protein has protein. Fats is something that are found in oils and butter and cheese and even paneer. Okay, and carbs is something that we just described, right? So a ketogenic diet is a diet where you only have fats, lots of fats, and some protein. Okay. No carbs whatsoever. Okay. All right. Now, if you're balancing out your vitamins and minerals, it is still a not bad diet to follow. But what happens is, कोई चीज़ आप जो 10 years तक follow नहीं कर सकते, वो चीज़ आप follow करोगे, it is going to be a disaster, right? So a lot of clients came to me having followed the keto diet पहले, right? उन्होंने 3 महीना keto किया था, 15-20 किलो कम कर लिया. But then, not 99, but 100% of those clients, अगर 15 किलो कम किया था तब, they gained 20. Okay. Right? So, their mental state, they broke. Okay? So, they were so tired of restricting a particular food group. They were so tired of following the wrong advice of restricting the food group that they eventually, वो एक बार डाइट ब्रेक हो गया, एंड एक बार वो ब्रेक हुआ तो वो रिकवर हो ही नहीं पाया, राइट? सो नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग, but then this is a very common trait that I see. And not just keto, a lot of clients, they come to me saying that मैं ये नहीं खा सकती, ये तो डाइट में नहीं खा सकते, राइट? Diet in their mind is boiled
vegetables and maybe boiled chicken or maybe raw paneer. Okay, that is not diet. Diet is whatever you eat, but it has to be done in a certain way. It has to balance out in a certain way. So, for example, your Indian meal is also a diet. Okay, your anything. So, a lot of clients tell me that butter nahi kha sakte, cheese nahi kha sakte diet mein. That cheese can also be a part of a diet that will get you results. Any food can be a part of your diet and they can still get you result if you have it in the right ये quantity. सब मैन मेड ही तो है, ये सब man-made. मैन ही है. Man-made. So no food is good or bad. So this is another very common myth that people come with, that this food is bad and this food is good. Good, yes. Right? And there is no such thing. There is no such thing. Yes, you are supposed to have a lot of good, healthy, vitamin-packed foods, but it does not mean that you have to restrict certain foods in order to get results. So that is another thing. ओके ओके. सो जब आप सीईओ बने थे, हाँ. राइट, काफ़ी आपके कलीग्स होंगे, हाँ, काफ़ी लोगों ने आपको देखा होगा कि नीलपर्णा इतना आगे बढ़ चुके हैं, हाँ, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई एंड उनके खुद के क्लाइंट्स स्विच होने स्टार्ट हुए होंगे, राइट. जैसे अगर एक ट्रेनर है और आपका कलीग है, उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं भी हो, yeah, राइट, एंड आपके क्लाइंट जो है उन्हें रिजल्ट दिख रहा है, आपके क्लाइंट आपके साथ में सेटिस्फाइड है, Correct. उनके क्लाइंट आपको स्विच हो रहे हो, ऐसे Correct. में क्लैशेस होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, कैसे मैनेज करते थे? So मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ. मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ because so in my case I had 20 clients as a coach. So I was the CEO and I was the coach at the same time for 3 years at KG, right? So I had my fixed 20 clients. वो 3 साल तक मेरे 20 client तो मेरे 20 client ही है. So मेरे पास वैसे भी जगह नहीं थी. But as a business leader, there is a lot of internal politics. Like in any other organization, it is always a fight for the same resources. Similarly, even in any gym, in a fitness center, where I had 50 trainers, okay, I had 50 trainers under me at KG. वो 50 trainers में ये clashes तो एक natural state में ये होता ही है. But one of the main things in our company culture, in the company culture that I build, is a foundation of learning and openness. ओके. Okay. Now, when it comes to learning and openness, for example, मैं एक trainer हूँ. Okay. This is the core of my organization. You know what you asked me is so on point. This is the core of my organization. The core of my organization is कि I don't care how much knowledge you have. I don't care how much knowledge my team has. I don't care how much clients you bring in from other gyms. I don't care how many clients you currently have. All I care about is your character. Now, what do I see in a character in all my team? And the character that I try to build is a character of learning and openness. All right. So, learning and openness means मैं trainer हूँ, मेरा अगर client कहीं और जाता है, right? My response should not be कि तूने मेरा client कैसे लिया, या why does it happen to me? How could my client go? The response should be, what do I improve? ओके. Right? They completely accept the fact that yes, the client has gone. The fault is not in the client. It can never be in the client. The fault is not in another trainer. The fault is not in anything external. That आपका जो loss हुआ, it's never a fault of anything external, but something internal that you should improve. Yes. So वो clashes कभी fights में convert हुए ही नहीं, because जब भी ये switching हुआ है, that is when the trainers learn to take it very positively. So we did a lot of character building exercises like that. So it was, no matter how many switches happened, it was always a harmonious environment at KG, at Lalbhai, even at BB. ओके. आज के डेट में अगर मैं आपको देखता हूँ, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखता हूँ, यू आर अ स्पीकर, जो एक वुमन एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी को आप इंस्पायर करते हो. काफ़ी लोग आपके वीडियोस देखते हैं और काफ़ी लोग आपके वीडियोस देख के सिर्फ देखते ही नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. ये पॉडकास्ट करने का मेरा मोटिव भी यही है कि काफ़ी लोग आपको देखें, आपसे इंस्पायर हो. एक मैसेज आज के यूथ के, जो एक कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, स्पेशली गर्ल्स, कॉलेज के बाद उन्हें काफ़ी बार नहीं पता होता है. आप पता चलेगा आपको सूरत जैसी सिटी के अंदर बिजनेस सबसे बड़े बिजनेस को ज़्यादा मोटिव, मतलब देखते हैं कि हाँ बिजनेस अच्छा होता है, बिजनेस ही करेंगे सब लोग. तो एक जॉब फैक्टर तो निकल ही जाता है कि जॉब कर, लेकिन गर्ल्स के पास में बहुत ऑप्शन नहीं होते.
राइट ठीक है, कॉलेज में जब 6 सेमेस्टर या बैचलर स्टडीज़ की बात करूँ, मास्टर्स के बाद में 4th सेमेस्टर में आने के बाद उनको एक डिसाइड करना पड़ता है कि अब क्या करेंगे आगे, या तो उनके मैरिज हो जाते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं जॉब करने की इच्छा होती है। क्या एडवाइस देना चाहोगे? Oh God, so many, so many. So late teens and early 20s is the most foundational stage of your life, right? You decide what direction is your life going to go to. वैसे तो you can decide at whatever age which direction your life is going to go to, but especially early 20s, because that is when your mind is the most flexible, the most malleable, the most open to possibilities and learning, right? Okay. Now, the biggest mistake that people make in their early 20s or when they are fresh out of college is they let their friends decide what they want to do. They let their family decide what they want to do. They get under pressure. They let what is trending in the market, let me see, this attitude decide what they want to do, right? They never take time to really think what they are good at and what it is that excites them. राइट। ओके सो एक तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि फैमिली ने बोल दिया, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, वो हो ही जाता है, वो हो ही जाता है, हो ही जाता है। सो वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए एक प्रोफेशन चूज कर लिया, फिर वही प्रोफेशन में स्टक रहे, वो मरते दम तक रो रो के करते रहे एंड उनकी लाइफ वहीं पे स्पॉइल हो जाती है, राइट? दे रिमेन मीडियोकर, दे रिमेन एवरेज, ऑर्डिनरी, because they did not listen to themselves, right? My advice to them is take out time. Yaar, you are just 20, you are just 21 or 22. You have time. You have time. Okay? Speed is not as important as direction is, right? Direction is way more important than speed. It is okay that your 22-year-old other friend is scoring very high marks in college. It's okay that your 22-year-old friend has got a very good package at this company. You are not competing with him at 22. राइट। वो 50 साल में पता चल जाएगा कौन कहाँ बैठा है। हाँ, काफी लोग बाहर चले जाते पढ़ने, कंपैरिजन हो जाता है। यस, कंपैरिजन, या फिर बाहर चले गए पढ़ने, वो कंपैरिजन हो जाता है, राइट? एट 22 यू हैव टाइम, यू डोंट हैव टू कम्पीट, ओके? एट 22 यू सिट डाउन एंड डिसाइड कि कौन से दिशा में आपको जाना है। स्पीड तो पकड़ लिया, लेकिन गलत दिशा में आपने स्पीड पकड़ा तो फिर वो एक जगह अटक ही जाओगे और वो जगह को आप इतना हेट करोगे कि देयर इज नो यू टर्न। राइट। दिशा को चूज करने में टाइम लगाओ। सही सही है। So yeah, so my advice is that, and don't let that direction be dependent on your family or friends or what's trending. लिसन योरसेल्फ। Listen to yourself, yeah. Yes. Listen to yourself. आज इंटरनेट है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है। आई एम 90s में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी जब मैं इनिशियल डेज की बात करूँ, इवन Yes. यू। Yes, लेकिन आज इनके जो जेनजी कल्चर है, उनके पास में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुआ है। absolutely, इनके absolutely, पास में रिसर्च करने के लिए सारी चीजें हैं, टूल्स है सबके पास, absolutely. ठीक है ना? वो ज्यादा से ज्यादा यूज करके Hmm. एक इंटरेस्ट फाइंड कर सकते। इवन मेरे को याद है यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था, यूट्यूब था मतलब कि हम उसको यूज नहीं करते थे अच्छे से, Correct. कैसे यूज करना है पता ही नहीं चलता था। Hmm. तो हमें तो यही होता था ना कि कोई बड़ा मिल जाता था, उससे एडवाइस ले लेते थे कि क्या करना है। हाँ. उसको देखते थे, उसकी पर्सनालिटी हम एडमायर करने लग जाते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ करना है। आपने क्या किया भैया? मैंने ये किया था, ठीक है, मेरे को भी यही करना है। हमारे पास कम ऑप्शन होते थे, आज के पास लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। राइट ऑप्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। वापस आप यू टर्न जब आप लोगे तब आप बहुत रिग्रेट करोगे, वापस जीरो पे आ गया। Yes, absolutely. And I think we are living at a wonderful stage in the world. Like, this is the best era to live in. Why? स्पेशली इन इंडिया। Especially in India. Yes. So see, with the internet, with social media, with the globalization, the world is a very small place now. Obviously. And there is a market for everything. So for example, a musician 20 years back, 30 years back, अगर उसको एक बिग ब्रेक नहीं मिले बॉलीवुड में, तो वो बंदा खत्म हो जाता। सही। राइट? सो वो 1 in a million चांस था उसका सक्सेसफुल होने का। आज अगर आप एक म्यूजिशियन हो, you have the whole world as your audience. You can start your online classes and पूरे दुनिया में तुमको 50 जन तो मिलेंगे जिनको आपका म्यूजिक समझ आएगा और आपसे सीखना चाहेंगे, ऑब्वियसली। राइट? चलो म्यूजिशियन तो एक बहुत टिपिकल एग्जांपल हो गया। लेट्स से यू आर इनटू मोबाइल कवर्स, you love हेलो किटी मोबाइल कवर्स, Okay. फॉर एग्जांपल। ओके, अब आप वो हेलो किटी मोबाइल कवर्स का मार्केट खाली आप अपने सिटी में नहीं देखोगे,
आप पूरे दुनिया में देख सकते हो, राइट? सो एकदम अजीब सी चीज, हेलो किटी मोबाइल कवर्स का भी मार्केट है क्योंकि पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है, पूरे दुनिया में आपका रीच है. सो यू डू वट एवर इट इज दैट यू वांट टू डू एंड यू विल फाइंड द मार्केट. देयर इज समथिंग फॉर एवरीथिंग विद द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ. आपने आज तक जितना सब कुछ किया, मैंने ऑब्जर्व किया है, पर्सनल ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस किया आपने. नीलपर्णा सेन पहले, ब्रांड सारे पीछे, नीलपर्णा सेन यहाँ पे खड़े हो गए, मतलब ब्रांड सारे वहाँ पे. honestly there was, आप बिलीव नहीं करोगे, so in KG, okay, so in KG I was learning things. I was learning what business is, what the industry is about. I was setting up systems, and that setting up systems is still happening, but वो base foundational systems जो setup किया था उसको लगे थे मेरे को 3 साल लगे थे. Okay. Alright, वो 3 साल में आप मानोगे नहीं, मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया Instagram पे, social media पे. I was off social media for 3 years. I have a post after 3 years when I uploaded. I had a post that, hey, I'm finally back. I was setting up my systems, etc., etc. So, and even right now, personal branding is literally the last thing that I care about. Okay. Personal branding is not a goal. It is a byproduct. Obviously. It is always a byproduct. You have to put in the work first. आप अगर एक बिजनेस लेके बैठे हो या फिर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप सोचोगे कि पहले मैं अपना पर्सनल ब्रांड बना लेता हूँ या बना लेती हूँ और फिर मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूंगे मेरे पर्सनल ब्रांड से. दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस. आप प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ, आप रिजल्ट्स बेचो, you bloody build a great product, and then people start appreciating that product. Then people start appreciating the man or woman behind that product, and that is when अचानक से वो पर्सनल ब्रांडिंग हो जाता है. राइट. ये आपको गिफ्ट मिलता है. वो आपको गिफ्ट मिलता है यार. आई अंडरस्टैंड. फिर आप अगर पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करके आपको वो एक थोड़ा सा एक बूस्ट मिल जाए, राइट, वो प्रोडक्ट में थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे खाली पर्सनल ब्रांड पे डिपेंडेंट है तो फिर तो कोई काम ही नहीं है यार. मैं पर्सनल ब्रांडिंग का क्या करूंगी अगर मैंने बीबी क्लब में अच्छा सिस्टम सेटअप नहीं किया, अगर मेरे क्लाइंट को मेरे सारे ट्रेनर से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इफ माय ट्रेनर्स आर नॉट रेवोल्यूशनरी, आर नॉट एडुकेटेड, देन मेरे पर्सनल ब्रांड से थोड़ी क्लाइंट्स आएंगे यहाँ पे. और फॉर एग्जाम्पल लूसिड, अगर खाना अच्छा नहीं बनता है तो फिर मेरे पर्सनल ब्रांड से कोई खाना खाने नहीं आएगा. सही है. सो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फर्स्ट. पर्सनल ब्रांडिंग इज अ बाई प्रोडक्ट. ओके. कि हाँ अरे यार यहाँ पे खाना अच्छा ये भी नीलपर्णा ने किया है, दैट इज वेरी डिफरेंट. बट नीलपर्णा ने किया है तो फिर जाओ. दिस इज अ मच लेटर स्टेज. सो फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट, ओके, फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट बिजनेसेस और पीपल हु वांट टू बिल्ड समथिंग बिग, डोंट फोकस ऑन यू फर्स्ट. मार्क जकरबर्ग ने भी नहीं किया था, स्टीव जॉब्स ने भी नहीं किया था, whoever you think of, Elon Musk is still not on social media. Right, he's just on Twitter. So वो अपना पर्सनल ब्रांड बना के फिर उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बना. प्रोडक्ट में मेहनत करो, disappear for a lot of years, build a great product, then you market it and your personal branding will take care of itself. Good. Yeah. Okay. So let's talk about mental health. Okay. फिटनेस की बात बहुत हो गई. फिटनेस एक सारे जिम के अंदर आज देखेंगे ना, सब फिजिक्स बनाने में लगे हुए, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात बहुत कम करते हैं. और ये प्रैक्टिस बहुत कम इंडिया के अंदर इवन. ठीक है ना. मेंटल हेल्थ के पर पहली बात, आप मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो बीइंग अ सीईओ? ओके यार, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डेफिनेशंस है, राइट. सो इन माय ओपिनियन अ गुड मेंटल हेल्थ इज हाउ you respond to a stressful situation. Okay, that is number one for me, right? So mental health, a bad mental health, which I see very common in employees, which I see very common in clients, is that they think the situation is controlling them. Okay. All right. The moment you think that the situation is controlling you or the world around you is controlling you, and you have no power to change it, you have no power to manipulate and recreate everything that is around you, that is when you fail at mental health. Mental health is a state where you know, where you believe that you can change everything that you want around you. Even आपके साथ में भी अर्ली एज में I had a lot of mental health problems, right? So being a CEO at the age of 22 was not easy.
I was just 22. And at 22, being the CEO of a 50 crore company and handling so many employees, most of them who were elder to me, I was the youngest in my company. And why would they listen to a young kid? Yes, Right. obviously. And plus, it was not just about authority and age. It was also about that there were so many things to solve, right? एक marketing solve करने गए starting में, okay? Because business is like, running a business is like having to run 10 horses at the same time. You're in a chariot and you have to control 10 horses at the same time. आप एक को संभालने जा रहे हो, बाकी के 9 इधर उधर हो गए. आप 2 को सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So one horse is marketing, one horse is account, one horse is politics, one horse is HR. So being at the top of an organization, right, you have to control all of these horses. And I was in such a state of overwhelm that it gave me a lot of depression. It gave me a lot of anxiety in the first few years of business, right? What really changed the game for me is I had given up fitness. For a while, I had even given up fitness, right? And it worsened my situation. Okay. What changed the game for me was again fitness. Okay. So hundreds of studies have proven that even a 20-minute exercise can reduce the symptoms of anxiety, can reduce the symptoms of depression. Okay. In all studies, in all clients, in all subjects that were tested, that were experimented on, right? A lot of times, exercise does to you what a good SSRI, okay, SSRI is an antidepressant. Exercise does to you what an antidepressant does as effectively, okay? It is a tool that you can use that you have at your disposal for free to reduce the symptoms of depression and anxiety, right? It changes the hormonal system in your body, right? And plus, combine that with goal chasing. So let's say you have a goal of getting stronger at the gym or losing a certain amount of weight. The moment you progress and that goal is the moment that you think that you are powerful, you can change things, and you start viewing the world differently. Okay. So again, a bad mental health can be completely reversed with a good physical health. So that time what changed the game for me was fitness. I got back into fitness and I started remembering that, dude, ये मेरे कंट्रोल में है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं ये गोल चेस कर सकती हूँ. You get in that mindset. So whatever mindset you follow in fitness, that चलो मेरे को disciplined होना है, मेरे को मुझे patience रखना है, मुझे focused रहना है, मुझे ये पता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे ये पता है कि मैं गोल चेस कर सकती हूँ और मैं वो गोल अचीव कर सकती हूँ. ये फिटनेस जो मेंटालिटी है, वो सारी मेंटालिटी ट्रांसलेट होती है, स्पिल ओवर होती है इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. सो इन बिजनेस ऑल्सो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट येस, आई हैव द कैपेसिटी to set a goal and achieve it. I have the capacity to be disciplined and control myself, and I have the capacity to do what I want and to create what I want. Okay. Right? Okay. And that shift in mindset के क्या करूँ, इतनी सारी चीजें हैं, to this is in my control was everything. And again, fitness had a very big role to play in it. Okay. So that means कि हम इंटरनली हमें एक शील्ड क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल को हम कंट्रोल कर नहीं सकते. फैक्टर कुछ भी हो सकता है. Of course. हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. Of course. अगर हमने अपने आप को सुधार दिया तो दुनिया सुधर जाएगी. Yes. Yes. ये ओपिनियन होना चाहिए. Yes. Great. Okay, so let's talk about technology in fitness industry. Okay. Being a CEO of BB Club, बहुत अच्छा ब्रांड है. काफी 1 साल हो गया, राइट? Yes. 1 साल में 1000+ क्लाइंट्स. Yeah, this is the फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन. Thank you. So fitness is growing. The market of fitness is growing, and 1000+ members is something that other fitness companies aim for in 3 years or 4 years, right? And they achieved it in less than a year. So thankfully, I've got a great team, and fitness is growing. And plus, there is a lot of learning that comes from the past few years, right? So technology in fitness, right? Okay, first of all, I have a policy, like no paper organization. I don't use papers at all, right? I hate paperwork. I hate filing. Everything is digitalized, right? So it shows up in little things like
right from a client coming in to storing the data of a client to follow-up systems of, a client. So for example, without technology, to manage 1,000 members and to manage the progress of 1,000 members and feedback of 1,000 members and having a proper follow-up system for those 1,000 members was impossible without technology. So from a business management point of view, technology is great. What other things technology has really helped us with is एक तो smartwatch, all right? Okay. Now let's get to giving results to clients. We are very, very, very big promoters of calorie tracking apps, and very big promoters of using your phone to count your steps. Okay. Right? So food and activity. एक्सरसाइज तो हम कंट्रोल कर देंगे, लेकिन बाकी के सारे दिन तुम क्या करते हो, दैट ऑल्सो वी कैन कंट्रोल टुडे थ्रू टेक्नोलॉजी. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लाइंट कम्स टू अस एंड सेज दैट नहीं मेरा तो पूरा दिन बहुत एक्टिव रहता है, मैं बहुत चलती हूँ, राइट, दैट कैन बी वेरीफाइड बाई लाओ आपका फोन लाओ, देखती हूँ मैं कितने स्टेप्स होते हैं. सही है. लाओ आपका एप्पल वॉच लाओ, देखती हूँ मैं कितने स्टेप्स होते हैं, राइट. सो इफ द क्लाइंट सेज कि मैं तो बहुत एक्टिव रहती हूँ, बिकॉज उनके दिमाग में वो बहुत एक्टिव इज 10 मिनट में एक बार उठ जाना या 1 घंटे में एक बार उठ जाना, वो तो बहुत एक्टिव हो गया, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट पूरा दिन बैठा है और बोलता है कि मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ. I have technology to verify it and then educate the client on what active really means, right? Similarly, a lot of clients come to us and say that हम तो बहुत कम खाते हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं है, पता नहीं कैसे मोटे हो जाते हैं, is usually an underestimation of what they eat. So they think they are eating only 1,000 calories, but in reality they are eating 3,000 calories. अरे एक समोसा ही तो खा लिया, थोड़ा सा सेव ही तो खा लिया. They have no idea how many calories are in save, and they have no idea how much really does one samosa have, right? Okay. And technology helps us track those calories, and it is a great educational tool for them to know, okay, oh shit, what I thought was nothing is 500 calories, and ये तो मतलब मेरा पूरा fat loss पूरा दिन का टारगेट ही खत्म हो गया मेरे एक छोटे से मील में. Okay, so even in results, it's been of a great help. Now, my system, so I specialize in personal training systems, in fitness coaching systems, right? So I coach coaches, I set up systems that really help the customers get better results and get better training. So in BB Club or in any of my organizations, everything that a client does is tracked. So we are not just talking about measurements, we are also talking about tracking your steps and tracking your food, as we say. We are also talking about tracking all of your workouts. So I have a system where I can see what आपने squat, आपने कोई exercise की थी 6 महीने पहले, तब आपका performance क्या था versus अब आपका performance क्या है. So all of it is there on my Google Drive, right? Okay. So this is how, and when a client sees the progress, the charts, the drive, and it's shared with them, it is just insane how much it motivates them and how much we can learn about what is really working and what is not working. Okay. So that's about. Then the biggest thing that the technology has done for us is social media. All right. Social media is a gift, okay, is a gift by technology to us, where we can promote the right message, influence the right people. So if I have a really good message, if I have to educate clients, right, I can educate them with my handle, with BB's handle. And that is when we meet them, when they are thinking of doing something. So आज एक मूवी देखा, घर पे गए, फुल पॉपकॉर्न हैवी लग रहा है उनको, बहुत टाइम से वर्कआउट सोचा है, वर्कआउट करना है, बट वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाए. उस टाइम पे सोशल मीडिया देख लिया, बीबी क्लब का पेज देख लिया, मोटिवेट हो गए, नेक्स्ट डे दे जॉइन द जिम एंड देयर लाइफ चेंजेस. एंड दिस हैपेंस टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे. This happens to millions of people every day in the world. So that is how technology has been a gift to us. Okay. So yeah. One last question. Sure. ईगो लिफ्टिंग की बात करूँगा. Yeah. काफ़ी जिम में आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप इवन बीबी क्लब में भी हुआ होगा ऐसा, केजी फिटनेस में. ईगो लिफ्टिंग एक ऐसा पॉइंट है कि आज अगर मैं जिम में जा रहा हूँ, मैं किसी को देख रहा हूँ, बिग बाइसेप देख रहा हूँ, ये स्क्वाट हैवी स्क्वाट करते हुए देख रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा लगेगा चलो मैं भी एक्स्ट्रा वेट उठाऊँगा मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा. फर्स्ट मैसेज तो ये. एक ऐसा केस आया था सूरत में, एक लड़की थी, कंपटीशन होता है जिम में, एक लड़की ने हैवी स्क्वाट किया था, एंड देन
उसके लेग्स पूरे जाम हो गए थे एंड डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास जाके उसने ऐसा बोला कि मेरे को ब्लैक कलर की यूरिन हुई। ऐसा एक स्पेशल Yes. केस था, Yes. ब्लैक कलर की यूरिन। एंड देन उसके सारे रिपोर्ट्स हुए देन पता चला उसके जो लेग्स के मसल्स है सारे ब्रेक हो गए एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गए 1 महीने के लिए। क्या मैसेज देना चाहोगे ये ईगो लिफ्टिंग के ऊपर? Okay. So, okay, let me first talk about the positive aspect of it. Okay. Right. So, ego lifting happens when you want to do more than what your body is capable of. Right. ठीक है. I love the people and this attitude of wanting to do more. That मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे change होना है. I want something more and I will push for something more. Okay. This is a very good thing to have. Yes. In business, in the gym, in lighting, in everything. But like everything, there is a systematic way. There is a systematic step. Right? So for example, अगर मैं एक जूनियर केजी के बच्चे को बोलूं, अगर एक जूनियर केजी का बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे आज के आज ही पीएचडी करना है, नहीं होगा, वो नहीं होगा, राइट? वो पीएचडी पेपर लेके बैठेगा, he will not understand it, he will think he is not made for PhD, he will leave it, he will be psychologically broken down कि मेरे से तो ये possible ही नहीं है, मेरे से कुछ भी possible नहीं है, yes, right? That is a psychological injury, obviously, right? Similarly, in the gym, if you are going in a very unsystematic manner, if you're progressing in an unsystematic manner, under the wrong guidance, bad things can happen. But bad things can happen in everything, right? So I think what I really would want to comment on this is that there is always a lack of systematic training in the circles, especially in the circles that want to do great things. yes, Right? And ego lifting is something that happens in very few cases in normal gyms. So 99% of the people in आज की प्रॉब्लम की बात करूँ तो 99% पीपल का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग को कुछ करना नहीं है, सो वो लोग को जगाना पड़ता है कि कुछ मांगो, राइट? अपने लाइफ से कुछ और मांगो, पुश मोर. So for 99% of the people, ego lifting is not a problem. Their problem is laziness and we tell them to push more. But वो जो 1% people हैं जिनको ज़्यादा करना है लाइफ में, जिनको who are very prone to ego lifting and then injuries, they need more guidance than these people. So that is my only thing. Right guidance, right guidance, right guidance. Okay. So नीलपर्णा मैम, बहुत अच्छा लगा आपको पॉडकास्ट की. Thank you. Same here. Had a lot of. आपका बहुत मतलब कि काफी टाइम से मैं आपको बुला रहा था. Finally we had done this podcast. हाँ. काफी क्वेश्चंस आप लोगों को आए होंगे. कमेंट सेक्शन में सारे पोस्ट करो. We will answer them. We'll try to answer them. Absolutely. And नीलपर्णा को यहाँ पे जाके आप फॉलो करो. मैं आईडी मेंशन कर रहा हूँ. डीएम करो उनको और she is a very great woman entrepreneur. I wish you all the best. Thank you. And wish you all the best for Lucid. Thank you. Thank you so for much. coming in my podcast. Thank you. Thank Amazing. you so much.